क्या आम कारों में और पुलिस के कारों में कुछ फर्क होता है? चलिए इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कार टॉक शो में। वैसे भी देखा गया तो इंडिया में क्राइम बहुत कम है ट्रैफिक का, लेकिन आप इसका मतलब नहीं कि आप क्राइम करो और चुप के निकल जाओ, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के भी हाथ बहुत लंबे हैं जानी। Compared to other countries, there is a lot less auto crime happening in India. That doesn't mean you get away with any crime because the police have an ace up their sleeve. The police car. These cars come filled to the brim with technology that help the police offer help to civilians or to offer fines to violators of the law. Last year, the government of India spent over 1,000 billion rupees of our tax money. Let's see where that money is being used. इंडियन ट्रैफिक पुलिस जो कार्स यूज कर रहे हैं वो है बोलेरो, XUV 300, एर्टिगा, इनोवा, जिप्सी, स्कॉर्पियो और जीप। Hopping inside, we see mostly the same car with some extra added bits to suit the needs of the police, like the radio communicator which helps the cops stay in contact with dispatch, or for the control room to quickly assign the car to a nearby case. Moving to the back of the car, you have 1 or 2 cameras monitoring everything inside and outside the car. In the trunk, there is a LiDAR or a radar gun used to mark speed and issue fines accordingly. On the bottom of the radar gun, you have a huge battery that powers all the systems inside the car while the car is turned off. It can power the systems inside the car for up to 4 days before needing to be charged. Extra equipment inside the car include a GPS tracker to verify if the cop is really on duty, or to quickly locate it if it gets stolen, or for coordination in police chases. A ticket machine that issues fines and lets the officer check previous violations, if any. There is also an alcometer, some first aid supplies and traffic cones. CarTalks के तरफ से ट्रैफिक पुलिस को अपना सलाम और उनके मेहनत और उनके ड्यूटीज़ के लिए हम शुक्रगुजार हैं। व्यूअर्स, आप भी अपने ट्रैफिक पुलिस को सपोर्ट दीजिए और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए। इंडियन ट्रैफिक पुलिस कार्स और फॉरेन के पुलिस कार्स को कंपैरिजन आप देखना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।